जय हिंद, भारत माता की जय। सभी लोगों का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसके अंदर जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उनको मैं 10 लाइंस के अंदर डिस्क्राइब करूंगा विद द हेल्प ऑफ एआई। बोर्ड वाले वीडियो भी जल्दी आएंगे, लेकिन अभी ये सीरीज में एआई से रिलेटेड मैं 10 लाइंस के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि अभी मेरा वीडियो प्लेट टेक्टोनिक्स पे है, इसके साथ ही मैं जैसे कि अपने वैगनर थ्योरी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर और भी सारी चीज़ें हो गई, इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो गई, दूसरी और भी जो टफ चीज़ें हैं। इसके अलावा अपन फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब पूरी ज्योग्राफी अपन 10 लाइंस पे कवर करेंगे। जैसे कोई एक टॉपिक को केवल उसकी मेन 10 लाइंस में समझने के लिए कि भाई वो चीज़ होती क्या है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक है तो उसको अपन केवल और केवल 10 लाइन के अंदर समझेंगे। वो 10 लाइन जो हैं वो मैंने ये वीडियो जो बनाया है या ये सीरीज़ जो चलेगी वो एआई की मदद से वीडियोस चलेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, नहीं तो उसके बिना आपको ये मेरे वीडियोस मिलेंगे नहीं। तो आगे अब आपको प्लेट टेक्टोनिक्स का पूरा वीडियो मिलेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। Plate tectonics. Here is a 10-line overview of plate tectonics based on geological principles. Plate tectonics is the scientific theory that Earth's outer shell is divided into several large, rigid plates. 2. The Earth's outer shell is divided into several rigid plates, known as tectonic plates. 3. These plates consist of the crust and upper mantle, sitting on top of the pliable asthenosphere. 4. There are 7 major plates, including the Pacific, North American, and Eurasian plates. 5. Plates are in constant, slow motion, moving at speeds of roughly 2 to 15 centimeters per year. 6. The movement is driven by convection currents in the mantle caused by heat from the Earth's core. 7. Plates interact at boundaries, diverging, moving apart, converging, colliding, or transforming, sliding past. 8. Divergent boundaries create new crust, such as mid-ocean ridges. 9. Convergent boundaries create volcanoes and mountains, while transform boundaries are often associated with earthquakes. 10. This continuous process shapes the Earth's surface, forming oceans, continents, and geological features.